Tiwari from class 10. It's a pleasure for me here to speak on this farewell party on behalf of my class. So, finally the day has came when all of us has to say goodbyes to each other. We, the student of class 10, has to need to step up into the world and take a path in life. I thank you to my school for making us enough capable to achieve our goals and dreams. On this beautiful occasion, I take an opportunity to express my gratitude towards my teachers. I thank you to my teachers for believing in us and supporting us. Guidance and all the teaching is very nice. To my friends, the laughter, the tears, the shared secrets are very nice. This is the suitcase of glimpses which we will carry with us. So each of the students has a different journey in school, but my journey was, I started my journey with fear, but now it's time to end it in tears. Tears of joy, sorrow, happiness, sorrow of not having the joyful moments tomorrow. This journey taught me to smile and face the challenges which I couldn't embarrass. Soon this day will pass like a breeze that would otherwise make me sneeze. My heart will always have a place for those days. Those days which started in June and ended in May. At last, I miss this journey very much. I have so much to say, but the lines are few. Just wanted to say thank you. नमो नमः। अहं श्रेया गणेश तेलंगी। अद्य विदाय समारोह मम विदायपूर्ण निवेदनं यदा भवन्तः चत्वारि भाषणानि शब्दानि शान्ततया शृणुतः यतश्च अत्र विदाय समारोह अत्र उपस्थितां सर्वाणां मनसि शाला इति द्वयोऽक्षरशब्दस्य विशेषं स्थानं प्राप्तम् अस्ति। विद्यालय शब्दः कर्णाय वा नेत्रयोः आश्रुपातः मुखया स्मिता आगच्छति। तथैव मनसि भिन्नभावः अनुभूयते। विद्यालयः अस्मान् बहु अनुशासनं शिक्षयति। जीवनक्षेत्रं कथं विजयं प्राप्तुम् इति च शिक्षयति। विद्यालयः भवितव्यं कथम् इति शिक्षयति चेदपि मित्राणि अस्मान् कथं जीवितुम् इति शिक्षयति। मम दशमकक्षा यात्रा सुखेन च हर्षेण सम्पन्ना अस्ति। अयम् अन्तिमः दिवसः, न सम्बन्धः, न धनं, न सहचारः, केवलं एतावता। धन्यवादः। सुस्वागतम्। इथे उपस्थित सर्व मान्यवर अतिथी मनापासून स्वागतम व इथे उपस्थित सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांनाही मनापासून स्वागत आहे। मी सईगा विद्यार्थी 10वी अ मध्ये विद्यार्थिनी आज काही शब्द बोलणार आहे। कालच तर शाळेचा पहिला दिवस होता। कालच तर सर्व मैदानावर एकत्र खेळत होतो, हसत होतो। कालच तर वाढदिवसानिमित्त सगळ्यांपेक्षा वेगवेगळे कपडे घालून सर्वांना चॉकलेट वाटत होतो। आई मला ताप आला आहे, मी शाळेत जाणार नाही असं आपण हट्ट धरायचो। क ख ग ह्या वया पूर्ण करण्यापासून आता प्रॅक्टिकल वही पूर्ण करून द्यावी लागते। कुठे एक एक शब्द उत्तरे लिहित आता एक एक पानांची उत्तरे लिहावी लागतात। शाळेच्या सुरुवातीत शाळेत न जाण्यासाठी आईला धरून राहायचो आणि आता तिच्याकडेच आई मला शाळेत जायचं आहे असा हट्ट धरतो। जीवनातील हा 12 वर्षांचा प्रवास क्षण मला निघून गेला असा वाटतो। ज्यांच्यामुळे मी हे सर्व लिहू शिकले व वाचू शकले त्यांच्याबद्दल काही शब्द बोलू इच्छिते। त्यांनी नेहमीही आमच्या भल्यासाठी विचार करून आमचे मार्गदर्शन केले। तुमच्या ओरडण्याचा व मारण्याच्या त्या क्षणी आम्हाला फार राग आला, पण ह्या क्षणी समजते की त्यामुळेच आमच्या सुधारणा झाल्या। आता तो मार व ओरडा खायला आमच्यातील विद्यार्थी नेहमी तरसतील। तुम्ही जरी आम्हाला विसरलात तरी आम्ही तुम्हाला विसरणार नाही, कारण तुम्ही आमच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग आहात आणि राहणार। तुमचे आभार मानताना मला शब्दांची कमतरता भासते। शेवटच्या दिवशी शेवटच्या वेळी विद्यार्थी म्हणून ह्या शाळेच्या रिकाम्या कॉरिडॉरमध्ये चालत असताना सर्व गमती आठवत होत्या। त्या क्षणी समजले की अब जाने का जब आज आजादी का वक्त आया तो इस पिंजरे से मोहब्बत हो गई। ह्या
तुमच्यासोबत आयुष्यभर राहतील आणि मला खात्री आहे तुम्ही ही आठवणी तुमच्यासोबत घेऊन जाल. मला खात्री आहे शाळा संपली म्हणून आपण अनोळखी होणार नाही. आपल्यातील मैत्री संपणार नाही. ही शाळा म्हणजे एक फक्त इमारत नव्हती तर आमच्यासाठी दुसरे घर होते आणि ह्या घरात रक्ताने जुळलेले नाते नसले तरी रक्ताच्या पलीकडचे मैत्री जपणारे नाते होते. शेवटी एकच म्हणेल की अभिना जाओ छोटे ते दिल भी भरा. Good afternoon, honorable chief guests, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. Today, I stand here on behalf of my class 10th. Myself, Aksa Irfan Sheikh. Today, I would like to share my few moments with all my friends, teachers, who have helped me throughout this journey. This journey was really incredible. If I start to say, then the words will left over it. I started this journey 12 years before, and now it is now up to end. We are stepping out of the school just as the shedding leaves from the tree. I would like to thank all the faculty which was provided to us and all my friends for being part of this journey. Firstly, I would like to thank our respected HM sir for always guiding us, supporting us, motivating and dedicating us. Then our class teacher, Ms. Darshana teacher, who always supported us and guided us in every situation. Then all the teachers, Gauri teacher, who always used to explain us with each concept with a unique and explain relative concept with an explain relative example. I would like to thank our Srikanth sir for always teaching us such creative drawings. Then all the faculties which were provided us, Rajendra sir and Ganesh sir. How can we forget those jokes and our great laughter? So that it was fun and exciting. I was not able to understand grammar up to standard 8, but now it's directly opposite. This is because just an audio, our dearest Manisha teacher. We always have our laughters and joy. Ashwini teacher was our class teacher from standard 5th, and the joy which we have created with her was really incredible. Dear teachers, we may not say this every day, but today, your inspirational words are like the beautiful fingerprints which has etched our hearts and memories binds forever. Dear friends, I would like to thank every one of you for being a part of my journey. As today I am here because you all have supported me and dedicated me. Lastly but not the least, goodbyes are not forever, are not the end. It simply means that I will miss you till we meet again. And maybe in the another universe we will be classmates again. Thank you. Respected principal sir, teachers and my dear friends present here, a very good afternoon to one and all. Before I begin, I want to thank the teacher for giving me this opportunity to speak in front of you all. The word school carries a different meaning for us. It is an emotion for us. We get transported into another world where we spend half of our day in studying, writing, reading and enjoying activities like sport, music, etc. The thought this is our farewell makes me emotional because it makes me emotional as well as nervous. Because we are leaving that school that has taught us everything. It is very difficult to live separate from this school. It is our souls are connected to this school. We have the best moment of our life in this school. It makes me really sad that we are leaving this school this day. And it was a 12-year back journey for me and my friends. 12-year journey for my friend. It makes me emotional. When my father got me here, I was blank. But my teacher has taught me everything from reading, writing and make me that level of capable for fighting the next level challenges. It make me evolve and make me that capable for the challenges. And thank you all the teachers that making me this type of capable for facing the difficulty. I am very thankful to all the teachers and sirs and keeping us motivated. In future when we meet, the whole batch will be that make you proud. Thank you. I am Akansha Sanjay Kushwaha and standing in front of you to
bid you all a goodbye. This building is not just built up of bricks, cement and mortars. It is built up of emotion, bonds and friendship. From the benches to the corridors, from the playground to the library, everything has memory. Today when I stand here, I feel really emotional as the journey started 13 years back. When I entered this gate, my eyes was filled with curiosity. I was never a kid to cry, but now when the time has arrived to leave the school, it makes my eyes fill with tears. I am so much joyful that I shared this part of my life with you all. If I get a chance in future to repeat any event from my life, I would repeat this school years. I would repeat to be with you all. The memories we shared, the lunches we had, the recess in which we played and laughed, it was memorable. This school gave me ability to talk in front of you all. This school gave me the ability to communicate. I'm so thankful to the school for believing in me when I did not even believe in myself. Once principal sir said, when he walked into our classroom, he said, your presence should be that much effectful that when you walk out of the room, people should feel your absence. I hope, Principal Sir, I was able to make you feel my presence. Each and every line said by teacher is imprinted in my mind. I still remember when the time I was being really overconfident with my studies, Manisha teacher corrected me and said, don't be so overconfident. Confidence is good, but overconfidence is not. She did not judge me, but she chose to correct me. I'm so thankful to that. And to each and every one teacher, my Darshna teacher, she was very strict, but she was the best class teacher I could ever ask for. Here, Praveen sir is not present, but I would like to thank him as well, because in 4th standard he gave me the opportunity to participate in a competition, and that time I built up my confidence. From hating school to loving it, from crying when we enter to crying when we leave, we all grew up as kids. Thank you all. Thank you to all, each one of you present here. Thank you to the Sharad uncle and Vijay uncle. Thank you everyone. I'm really grateful to spend my time with you. For each one of you taught me something. I'm really grateful. Thank you so much. सुस्वागतम. इथे उपस्थित सर्व मान्यवर अतिथींचे मनापासून आभार आणि स्वागत. मी तेजल गर्जे. आज आपण 10वीच्या निरोप समारंभासाठी निमित्ताने जमलो आहोत. शाळेचे बंधन सोडून पुढच्या शैक्षणिक टप्प्यात आपण प्रवेश करणार आहोत. आजचा दिवस हा माझ्या मित्रमैत्रिणींच्या कायम लक्षात राहण्यासारखा असतो. आयुष्यातली महत्त्वाची वर्ष आपण या शाळेत सर्वांनी मिळून घालवली आहे. कोणी आधीपासून तर कोणी नंतर या शाळेत आले व त्या शाळेचेच होऊन गेले. शाळेने व शिक्षकांनी आम्हाला खूप काही दिले. आता आम्ही पुढच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर जाणार आहोत. त्यामुळे शाळेने व आमच्या शिक्षकांनी केलेल्या संस्कारांची शिदोरी घेऊन जाणार आहोत आणि या जगात वावरणार आहोत. या शाळेत अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले गेले. त्यामुळे त्याचा आमच्यावरती चांगला परिणाम झाला. तसेच आमच्या शाळेतील शिपाई काका, मावशी व संगणकाचे सर यांचेही आम्ही सर्वही ऋणी राहू. त्यांचाही आमच्या शालेय जीवनातील वाटा महत्त्वाचा व मौल्यवान आहे. शाळेतील वर्ग, बाक, टेबल, फळा, कपाट, बसण्याची जागा, मित्रमंडळींसोबत घालवलेले आनंदाचे व दुःखाचे क्षण हे अनमोल आहेत. शाळेतील रुसवे फुगवे, शिक्षा, मान सन्मान, अपमान, भांडण तंटे सर्व आठवणी आम्हाला आयुष्यभर येत राहतील यात शंकाच नाही. खरं तर आम्हाला तो दिवस अजूनही आठवतो ज्या दिवशी आपण सगळे शाळेत न यायला रडत होतो, तर आज शाळेत यायला रडतोय. या शाळेचे आमचे अतूट बंधन जुळले. ही शाळा कधीच आमची किंवा तुमची नव्हती, तर ती नेहमीच आपली राहील. ते म्हणतात ना, जेव्हा सुटकेची वेळ झाली तेव्हा सगळ्यांना त्या बंद पिंजऱ्याशी प्रेम झालं होतं. हे आम्हाला पटतंय. या शाळेने आम्हाला फक्त पुस्तकी ज्ञान नाही दिलं, तर सामाजिक ज्ञान सुद्धा दिलं. शाळा ही आमच्या जीवनातील अविभाज्य भाग झाली आहे. त्यामुळे तिला विसरणं कधीच शक्य नाही. शाळेमुळे भेटलेल्या एवढे सगळे
मित्र मैत्रिणी व शिक्षक भेटले त्यासाठी धन्यवाद. थँक्यू. Good afternoon to honorable chief guest, respected principal and teachers and my dear classmates. I am Rishikesh Deepak Pawar standing in front of you to express few words on this farewell day. Today is a special yet emotional moment as we say goodbye to our school. Our teachers have guided us and our friends have been our greatest support. Our school gave us precious memories that are truly priceless. The day when I first walked into the school premises is still fresh and new in my mind. Furthermore, at that time, life felt so difficult for me. As we know that those were the best days of our lives, we will miss those small memories like playing in the playground, sitting in the canteen, chatting in the corridors or classrooms. And who can forget the highly awaited bell for recess time and final school bell signaling that. Talking about honorable principal sir, they get mad on us. They are mad because they want all the students to achieve the success and the goal they have in their life. I like their madness. And thank you to all teachers who guided me to the as we move forward, let's cherish this moment and carry the lessons we have learned. Thank you to everyone who made this journey special and wishing my classmates all the best for the future. Thank you. माननीय मुख्य अतिथि और आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकों को सुप्रभात. मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्कूल का आखिरी दिन है. आज मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ी हूँ. वैसे तो आज एक खुशी का और दुखों का दोनों का दिन है. खुशी इस बात की है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल से हम एक साथ बड़े हुए हैं, हमें अच्छे दोस्त शिक्षक मिले ऐसे स्कूल में. और मेरे प्यारे दोस्तों, अलविदा कहने वाली हूँ. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा जो स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा. मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. और शुरू के पहले दिन से लेकर आज तक सभी पर मेरे याद में है. दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ाई करना. ना वो दोस्त रहेंगे ना दोस्त रहेंगे ना वो दोस्तों का याद रहेगा. अकेले हम रहेगा, अकेला आसमान रहेगा. थैंक यू. नमस्कार हमारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम तन्वी दीपक रजक है. आज का दिन हमारे लिए खुशी और गम का संगम लेकर आया है. खुशी इसके लिए क्योंकि हमें हमारी पाठशाला की खूबसूरत यात्रा पूरी करनी है, और गम इसलिए क्योंकि आज वो दिन नहीं रहेंगे जहाँ हम हंसते खेलते एक दूसरे के साथ बिताते थे. आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बीते हुए सालों की यादें आंखों के सामने ताज़ा हो रही है. वो असेंबली में नींद से भरी हुई आंखें, वो लेक्चर में टीचर से चोरी छुपे टिफिन खाना, और परीक्षा से ठीक पहले का तनाव हमारे इस जिंदगी की किताब का एक अनमोल हिस्सा बन चुका है. कुछ पंक्तियाँ हमारे इस सफर के नाम. कल तक तो था सफर अपना, आज वो खत्म होने आया है. दोस्ती की महफिल यारी आंखों में पानी लाया है. हंसते खेलते बीते थे दिन अब बस यादों में आएंगे, परेला में जो साथ थे दिल के कोने कोने में मुस्कुराएंगे. हमारे शिक्षक जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ के लिए तैयार किया, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है. उनका दिया हुआ ज्ञान और संस्कार हमें हमारी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा. धन्यवाद. Good morning to everyone who are present here, honorable chief guests, respected principal sir, and my teachers and my dear friends. Today, to myself, Prabodayal Mishra. Today, first of all, I would like to thank you all
for giving me this opportunity to say a few words. Today, I would like to take this opportunity to express my gratitude towards our teachers who have dedicated themselves tirelessly for our development and education. So, the story is not so old. When I came in this school in 7th standard, that time everywhere online lectures were going on. Everything was very new for me. But it was our teachers who gave me their support, knowledge and their guidance. I would like to thank to all our teachers for their efforts they have made for us. Finally, I would like to pay this farewell to all my fellow classmates. It was an honor and privilege to be a part of this journey with you. This year, we are going to face the biggest challenge of our life. And I wish that we all will pass with the bright colors. All the best. Thank you. नमस्कार सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे सारे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी चौबे और आज मैं आप सभी के सामने ये विदाई के दिन की एक छोटी सी स्पीच सुनाने जा रही हूँ। हम जब छोटे थे तब हम चाहते थे कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं और हम जल्दी से बाहर की दुनिया देखना चालू कर दें, लेकिन अब जब हम इस स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम वापस छोटे हो जाए और वापस वही मम्मी जब हमको स्कूल लेके आती थी और हम मतलब हमारे दोस्तों के साथ बैठ के टिफिन खाते थे, तूने क्या लाया, इसने क्या लाया, जो मतलब सब लाते थे शेयर करके खाते थे। लेकिन अब जब ये आज हमारा आखिरी दिन है स्कूल में और जब हमें ये महसूस हुआ कि आज के बाद हम सब वापस ऐसे बैठ के टिफिन नहीं खाएंगे, ना ही हम एक दूसरे से मिल पाएंगे वापस, लेकिन जब हम इस स्कूल से विदा ले रहे हैं तो हम अपने सारे शिक्षक और शिक्षिका को धन्यवाद कहना चाहेंगे। और ये स्कूल के सारे कोनों में हमारी यादें बसी हैं। ये स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये स्कूल हमारी यादों से बनी है। और हमारे प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स को थैंक यू सो मच। आपने हम सभी को बहुत सिखाया है। अगर हम कभी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपने हमें बताया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है और हमें सही रास्ता दिखाया। कल तक जो सफर अपना था वो आज खत्म होने वाला है। दोस्ती के ये महफिल यारों आंखों में पानी लाया है। हंसते खेलते बीते ये दिन अब बस यादों में आएंगे, पर ये लम्हे जो साथ बिताए वो वापस नहीं आएंगे। और मैं हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि जब मैं 8th में थी तो मैं स्कूल मतलब ऐसे बाहर मतलब कहीं गई नहीं थी डांस के लिए, लेकिन फिर HM सर ने मतलब मुझे बुलाया और बोला कि तुम जा सकते हो। तो उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और मैं फिर मतलब उन्होंने जब भी कुछ डांस का रहता था तो उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और अश्विनी टीचर जब हम 5th में थे तो मैं मतलब न्यू थी स्कूल में और मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मैं सबके लिए न्यू थी, लेकिन फिर अश्विनी टीचर हमारे मतलब फ्रेंड्स से भी बहुत क्लोज थे और उन्होंने हमको सिखाया कि ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा करना होता है। वो हमारे साथ टिफिन शेयर करके खाते थे, हमें कभी फील नहीं होने देते थे कि हम उनके स्टूडेंट्स ही, हम अपने बच्चों की तरह हमको हरदम किए हैं। और दर्शना टीचर ने 8th से हमारी टीचर है, क्लास टीचर है दर्शना टीचर, और उन्होंने 8th से हमको इतना कुछ सिखाया है। हमारी जो मराठी एकदम वीक थी उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए और हम मतलब नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कैपेबल बनाया कि हम अपना भी मराठी में किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और गौरी टीचर जो हमारी 6th में क्लास टीचर थे, जिन्होंने हमको बताया मतलब बहुत हमारे बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे। ऑनलाइन क्लासेस होते थे तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को हर तक बताया कि ये गलत है, ये सही है। और मनीषा टीचर ने हमारा 9th और 10th में हमारा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और बाकी सारे टीचर्स, लीना टीचर हो गए, रेशमा टीचर हो गए, मयूरिका टीचर हो गए और उज्ज्वला टीचर हो गए, जिन्होंने संस्कृत एकदम मस्त सिखा दिया हमको। और सभी टीचर्स को थैंक यू सो मच और धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए आपका। Good afternoon to all my friends, Shivan sir and teachers.
Today I will firstly thank you to all teachers and principals to give us a very good and memorable academic year. And secondly, I am sorry to my old friends if any time I will shout or I scold to them for any reason. Please forgive me. My favorite teacher or sir, no one is there, but one sir is my very most favorite sir, that is HM sir. I am a pampered child of HM sir. I remember one sentence of HM sir that be a good listener, not a speaker. That's why, thank you. That's why I'm not talking nicely with you because I'm a good listener. Yes. Thank you.
गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरबानी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम स्वयं चला